for loop within the another for loop we are using nested for loop. Means in one for loop you nested inside another for loop. How it is working? Second half class the second half मैं तो फुल टाइम तो स्टार्ट है आगे ଯିବା ସେ ହାଇ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କଥା କାମ ବି ଅଛି ମୁଁ ରଖିଲି ସେ ଗୋଟେ Here we are passing a value 1 to 6. Okay, तो हमारा आउटर लूप टा 1 ରୁ 6 जाए रिपीट हबो और इनर लूप टा 1 से वेरे इंक्रीमेंट हबो for I in range 1 to 6 for j in range 1 to I plus 1 I रो वैल्यू हमर केते अछि 1 अछि तो एठी मोर j रो रेंज 1 I रो वैल्यू चलिबो 1 plus 1 is 2 तो रेंज यूज कले कौन हम जब आम 1 की रेंज नौचे से 2 जाए 3 जाए 1 रेंज 3 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 and 2 it is not including 3 तो एटी सेमती रहला 1 और 2 रहला तो एटी प्रिंट करिवो आई तो मटा रन करके देखौची जानि परिबो देखो एटा केमती प्रिंट होची
pyramid structure of print है first है for I in range 1 to 6, for j in range 1 I plus 1 एटी 1 रहला 1 ना वैल्यू रहला कोन I plus 1 एटा होची 2 ने 1 रो स्टार्ट अब 2 तो प्रिंट I रे हम एटी प्रिंट कले कोन I रो वैल्यू 1 अछि एटी 1 प्रिंट कर 1 प्रिंट कला परे I रो वैल्यू कोन हे जिवो इंक्रीमेंट हे जिवो एटी j रो वैल्यू इंक्रीमेंट हे जिवो 2 तो 1 रो 2 जेटा 2 जिवो 2 टाउ शो करिवो कारण 1 रो 2 रेंज भीतर नेले हमर 1 ही जिवो तापर एटा कोन हे जिवो ना आउटर लूप को पळेला I रो वैल्यू इंक्रीमेंट हला 1 थिला बे हे गला 2 तो 2 प्लस 1 एटी हे गला 3 माने मोर एटी वैल्यू टा प्रिंट करिवो 1 रो 3 तापर j रो वैल्यू हला 1 इज लेस देन 3 कंडीशन हला ट्रू तो प्रिंट करिवो 2 नि j रो वैल्यू इंक्रीमेंट हला 2 लेस देन 3 कंडीशन इज ट्रू देन मते एटी आउथरे प्रिंट कला 2 तापर पुनी नेक्स्ट टाइम को बोला बुझी होची मो जोटा कहूची यस सर एटी टिके अलगा प्रकार रहउची एटी हमर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किछि नै रेंज थ्रू रे ऑटोमेटिक जीवो तो सेमते जते बेले I रो वैल्यू इंक्रीमेंट हो 3 तो 1 रो जीवो 3 plus 1 4 माने 1 रो 3 जे प्रिंट करिवो तो I रो वैल्यू अछि 3 तो 3 प्रिंट कला j रो वैल्यू इंक्रीमेंट हला 2 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू देन 3 प्रिंट कला I रो वैल्यू 3 अछि j रो वैल्यू इंक्रीमेंट हला 3 लेस देन 4 कंडीशन इज ट्रू प्रिंट I एटा 3 प्रिंट कला j रो वैल्यू इंक्रीमेंट हला 4 तो 4 टा हमर फॉल्स हे गला तो एटे हमर कंडीशन स्टॉप हो एमती अप टू 5 जाए सी शो करिवो बुझि पाइलो यस सर ओके Okay, so next I will go for while loop. So while loop is used to execute number of statement or body till the condition passed in the while loop is true. So till my condition is true, the body of the loop is executed. While expression, then body. While expression. So
while expression if your condition is true माने मोर जे पर्यंत while loop रो condition टा true अछि से पर्यंत मोर body of the loop टा execute होबो the while loop is used to execute number of statement or body till the condition is passed in while is true once the condition is false the control will come out of the loop it is just similar to your other looping construct so now I'm showing the example of while loop. So here it is showing you from 10 to up to 0 means till your value is greater than 0 it is a decrement 1 value so a equals to 10 10 is less than 10 is greater than 0 condition is true then it is printing you 10 then 10 minus 2 is 8 now 8 is greater than 0 condition is true then it is printing you 8 so this process is continued till your what while loop condition is not false now I go for it. Raw underscore input is not mandatory. If you use any other ID or Anaconda ID, so raw input is not mandatory. If there is a problem, if your screen is goes up, means after display it is automatic कटि जाउथो continuous display न करूथो तो से जगह में raw input लगेगा तो एटा different operating system रे different हबो system wise भी different रहिबो last line टा एटा mandatory नुई तो जोटी तमारो problem face करिवो माने screen टा output screen टा continuously visibility न हबो तो सही जगह रे हमें raw input return wl.py printing in 642 clear Yes, sir. next program it is showing you 1 to 5 लिंक डाला तमना ज्योति तो ज्योति मींस जे वाई ओ टी आई ना तमना क्लास कोना ग्रुप रे ऐड करछनी सेठी तो तुमको लाइव क्लासेस रो लिंक मिल जिवो
पूरा चीज 22 run of recorded classes. कॉपी करके गूगल क्रोम पे ओपन करो. ओपन करो. underscore ये जो लिंक टा देगी input ओपन इन गूगल क्रोम. गूगल ओपन कला तो लिंक रू डायरेक्ट न करूची ताले कोन करियो लिंक टाको कॉपी करके गूगल क्रोम रे गोटे ये पेस्ट करो ना it is printing you 1 to 5 बुझे रहते Yes, sir. practice करछो सर एबे टिके घरे काम चलची बोली मु करिनी किछि भी प्रैक्टिस. एटा ऑनलाइन रे मारिबो ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर गोटे लाइबो आसीबो Okay. पाइथन जीडीपी गोटे आसीबो जीडीपी ए पार्ट ओपन करके तमे डायरेक्टली भी तमे रन कर परिबो किछ असुविधा नहीं. मु डाउनलोड खाली कर देइछि किंतु किछि प्रोग्राम रन करिनी. ठीक अछि जतरा टाइम पाइबो सेटा करिवो आ जदी माने सॉफ्टवेयर रे किछि प्रॉब्लम रहला ऑनलाइन जीडीपी सेटा ओपन करी परिबो जदी किछि प्रॉब्लम होला मते कहइबो. तो एटा होछि सॉफ्टवेयर टा देखै दोजो onlinegdp.com/online python compiler এটা ইউজ করি রন করবে ଆସିଲା এটা হচ্ছে সেই এনवायरनमेंट তুমি নিজে যাহা भी প্রি ডিফাইন্ড কোড থিবো তাকো রিমুভ कर দেবো তারপরে তোমার নিজ কোড এটি লিখিবো বুঝিলা आज्ञा. जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन न कले भी चलिए. Is an example of while loop with else clause. That means मोर कंडीशन जेतबे फॉल्स होची तो से समय रे का होबो ना else ब्लॉक टा एग्जीक्यूट होबो. सो इन लूपिंग Okay, so here it is printing you 1 to 5, 1, 2, 3, 4, 5. Now when I value is 6, so it is showing you 6 is no longer there.
no longer or less than 6. The 6 value टा एटी false है. एटी मतलब 6 value रे ही मोर exit है. You know, I is no longer than 6. I value that we are passing, so that is must be less than 6. तो ସେଥିପାଇଁ आर आउटपुट है yes. बुझेला? Yes, sir. While loop with else block जोटा कि हमर पाइथन ने एटा else block टा पाइथन रे करबो. Then break statement. The break statement is used just like a jump statement. So that is used to pass the control to the end of the loop. When the break statement is applied, the control point to the following. Hence, applying the break statement make the loop to terminate the control and to next line pointing after the loop. For I 1, 2, 3, 4, 5, we're defining a loop and with the least value. So least value it will contain 1, 2, 3, 4, 5 value it will contain. Then when your I value is 4, if I value is 4, it is retrieve 1 1 value. So when your I value is 4, it is showing your print element found. Then break the statement. Okay, so at the time of 4, it will break the loop. It's showing you 1, 2, 3. At the time of 4, it break the element. बुझे लाइका break statement? Yes, sir. Another example हमें देखियो break statement रो. Okay, so here we are passing a string value for value in string. So it is retrieve the 1 1 letter, but when it is find I, at that timing it is break the statement. Now check.
is printing you S T R, but at the time of it is retrieve I, then it is chosen, it is break the statement. The break is used, it is retrieve all the value from the loop, but when your condition has made, so at that timing, it is breaking, it is break the statement. And next is continuous statement. Continuous statement is used to skip the particular iteration. Break is used to break the statement. Continue is used to skip the particular statement. So like here in the while loop, we are printing a to 5, a less than equal to 5, which is retrieve all the values, but we are using here when your value is modulo 2, means which value is divisible by 2 and the remainder is 0, it is skip that element. That is printing you 1 to 5, but here your 4 is missing, your 4 is divisible by 2, so that 4 is not present here. Bujela, pointer? Yes, sir. Now I'm showing the example.
are the same example we are passing here. It is string if value equal to I. So when it is I, it is give that particular string. You check here. It is printing you total string str, but at the time of I, it is keep that particular character. बुझे ना? Yes, sir. It is all about your for loop. You write a program, okay, of that take a number and find out the reverse by using Python. Reverse a number. Next LCM and LCM. Okay, and another is calendar now. Okay, so 3 program you have to do and send me in the WhatsApp. Here. Sir, ଆଉ ଥରେ dictate କରିବେ. First होती LCM टा गोटे बाहर करिवो. ଆଜ୍ଞା. तापरे calendar number गोटे बाहर करिवो. तापरे multiplication table show करिवो 10 नु 20 जाए. बुझे ना? Yes, sir. ये तीनटा करी कि मते देखेबो माने लेखि मते देखेबो सो पठेबो हला. ଆଜ୍ଞା. नेक्स्ट क्लास रे मैं पठे देबी नोट. सर काली क्लास टा मु करि परिबेनी ता सैटरडे क्लास रखिबे. अच्छा. आज्ञा. थैंक यू सर. हाँ